जी अस्सलाम वालेकुम। टुडे अवर सेशन इज़ हेमाटोलॉजी एंड ऑन्कोलॉजी। पर्टिकुलरली हम इस सेशन में ल्यूकीमियास पे फोकस करते हैं, उसके डिफरेंट टाइप्स पे, सच इज़ एल एम एल सी एम एल एंड सी एल एल। बट फर्स्ट ऑफ ऑल, बिफोर गोइंग टू द ल्यूकीमिया कंसेप्ट, हम थोड़ा सा बेसिक चीज़ों को कवर करते हैं क्योंकि इसी बेस पे हम आगे ल्यूकीमियास डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो हेमाटोलॉजी, इट इज़ द स्टडी ऑफ ब्लड इज कॉल्ड हेमाटोलॉजी, एंड ऑन्कोलॉजी मीन्स दैट द स्टडी ऑफ कैंसर इज कॉल्ड ऑन्कोलॉजी. So hemato-oncologists mean that there will be hematological malignancies, right, such as leukemia, lymphoma, or multiple myeloma, or essential thrombocytosis. This is different malignancy in hematology system. So definition hematology is, as I said, that the system which we deal with the study of blood, such as erythrocytes, RBCs, WBCs and platelets. जो भी जिस सिस्टम में हम WBC के बारे में डिस्कस करें, RBC के बारे में डिस्कस करें और प्लेटलेट्स के बारे में डिस्कस करेंगे, उसको हम हेमाटोलॉजी कहते हैं, ठीक है। हेमाटोलॉजी में कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी के बेस पे हम आगे फिर पैथोलॉजी में कोरिलेट करते हैं। इसमें फर्स्ट हमारे पास है ब्लास्ट सेल्स, जो कि इमेच्योर सेल होता है। साइट्स, जब भी हमारे पास साइट वर्डिंग आता है, इसका मतलब है कि ये सेल हमारे पास कंप्लीट मेच्योर होगा। Mega macro means that something is big. Mega or macro, this two word is interchangeable, right? So इसका मतलब है big or something large. और कैरियो मीन न्यूक्लियस। इसमें हमारे पास ये दो वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है और इसी के बेस में हम आगे, अगर सपोज हम अक्यूट एल की बात करें, अक्यूट लिम्फोब्लास्टिक या अक्यूट माइलोब्लास्टिक ल्यूकीमिया की बात करें, तो हमारे पास ब्लास्ट सीरीज से अराइज होता है। और अगर हम सी एम एल और सी एल एल की बात करें, तो वो हमारे पास साइट्स की जो सीरीज़ है उससे अराइज होती है। मैं आगे फिर आप लोगों को डायग्रामेटिकली शो बताता हूँ, ठीक है। सो एरिथ्रोब्लास्ट मीन दैट दिस आरबीसी विल बी इमेच्योर, एरिथ्रोसाइट्स मीन दैट दिस आरबीसी विल बी completely mature. Now almost all blood cells in adult are synthesized in bone marrow of a long bone. Of course, आरबीसी की अगर हम एरिथ्रोपोइसिस पढ़े तो सपोज दिस इज कॉल्ड लॉन्ग बोन, राइट। ये सपोज बॉडी की लॉन्ग बोन है, मैं फीमर की बात करूँ सपोज, इसमें हमारे पास क्या होती है, मिडुलरी कैविटी होती है जो कि स्पंजी सेल से बन होती है। इसको हम बोन मैरो कहते हैं, ठीक है। यहाँ सपोज इधर करें स्पंजी साइट्स, इसको हम बोन मैरो कहते हैं। तो इसमें हमारे पास क्या होती है, हेमाटोपोइटिक एक्टिविटीज़ होती है, ठीक है। और इसमें हमारे पास आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज एंड प्लेटलेट्स, ऑल न्यूट्रोफिल, बेसोफिल, इसकी प्रोडक्शंस होती हैं। तो जो भी हम बात करते हैं एडल्ट में, इसमें आरबीसी की प्रोडक्शन कहाँ पर होती है, वो हमारे पास बोन मैरो में होती है। बोन मैरो कहाँ पर है, वो हमारे पास लॉन्ग बोन में है, ठीक है, सच एज फीमर, ह्यूमरस, स्टर्नम, क्लाविकल, ठीक है। इसी तरह हमारे पास बॉडी में जितने भी लॉन्ग बोन है, उसमें हम स्पेसिफिकली बोन मैरो होता है। और बोन मैरो में हमारे पास क्या होती है, आरबीसी की प्रोडक्शन होती है, जिसको हम हेमेटोपोइसिस कहते हैं, सही है। सो ऑलमोस्ट ऑल ब्लड सेल इन एडल्ट आर सिंथेसाइज्ड इन बोन मैरो ऑफ अ लॉन्ग बोन. Now, this concept is very important, that young liver synthesize blood. अगर हम इंट्रा यूट्राइन लाइफ की बात करें, एक बच्चा है वो अंडर यूट्राइन लाइफ में है, उसमें हमारे पास जो आरबीसी की प्रोडक्शन होती है वो हमारे पास यॉक सैक में होती है, लिवर में होती है एंड स्प्लीन में होती है, ठीक है। सो ड्यूरिंग इंट्रा यूट्राइन लाइफ द साइट ऑफ आरबीसी प्रोडक्शन इज अ यॉक सैक, लिवर एंड स्प्लीन. Yolk sac, this is the intramembrane structure which help in the hematopoietic activities during intrauterine life, and liver is the one of the hematopoietic organ in the intrauterine life, and spleen is one of them, right. स्प्लीन, लिवर एंड यॉक से, ये तीन ऑर्गन आप लोगों ने याद रखना है एम्ब्रियोलॉजिकली। अगर हम इंट्रायूट्राइन लाइफ के बारे में बात करते हैं कि इंट्रायूट्राइन लाइफ में आरबीसी की प्रोडक्शन कहाँ पर होती है, तो यॉक से, लिवर एंड स्प्लीन। लेकिन वंस द बेबी इज बोर्न, सो इन तीनों का जो काम था वो ख़त्म हो गया। अब वो काम कौन करेगा, वो बोन मैरो करेगा, ठीक है। बोन मैरो कहाँ पर है, एज आई सेड, लॉन्ग बोन ऑफ द ह्यूमन बॉडी, राइट। सो मूव ऑन. Now, synthesis of blood cell in adult. Number first one is the diagram is very important. और इसी डायग्राम में मैं कोरिलेट करूँगा ल्यूकीमिया के साथ. So hematopoietic stem cells. Hematopoietic stem cell means that this will be further divided into two series. Number first one is myeloblast cells and lymphoblast cells. This concept shows directly that how RBC, WBC, and lymphocyte is developed. Myeloblast series means that this will be further divided into three
parts. Myeloblast mean, as I said, that blast shows this is completely immature. It will be further divided into three types, right? Number first one, erythroblast. Again, the blast is coming. It means that this RBC is still immature. Leukoblast, it means this WBC is still immature. And megakaryoblast, it means that this platelets is still immature. Now what happened? This RBCs further goes for maturation, that this will be becoming erythrocytes. Now साइट्स आया है ना, तो ये आरबीसी हमारे पास अब क्या होगा, ये मेच्योर होगा. ल्यूकोसाइट्स आया है तो साइट्स मीन दैट दिस डब्ल्यूबीसी विल बी कंप्लीटली मेच्योर. डब्ल्यूबीसी में हमारे पास क्या है, न्यूट्रोफिल्स है, एजिनोफिल्स हैं, बेजोफिल है एंड मोनोसाइट्स है. ठीक है, this is WBC. Now megakaryoblast, that once it mature, this will be converted into the megakaryocytes, and this megakaryocyte, it is also known as platelets, and platelets, it is the fragments. Now what is fragments? Suppose दिस इज़ द सेल, और ये सेल के हमारे पास फ्रैगमेंट्स हैं. ठीक है, और जब ये हमारे पास ब्लड वेसल्स हैं, तो जब ये फ्रेगमेंट्स डिटेच हो जाता है किससे, सेल से, और हमारे पास कहाँ आ जाए, ब्लड स्ट्रीम में आ जाए, तो उसको हम प्लेटलेट्स कहते हैं. ठीक है, सो दैट्स व्हाई वी आर कॉल्ड platelets is arises from the megakaryocytes, and this is the fragments of cells, right? Now lymphoblast, as I said, that lymphoblast means that this lymphocytes will be immature. Still this lymphocyte is immature. Now it will be further divided into two types. Number first one is B lymphoblast and T lymphoblast. B lymphoblast will be converted into the navy B cells, then it converted into the B lymphocytes. Now this B lymphocyte is mature. B lymphoblast, this is immature, and B lymphocyte, this is mature. Now B lymphocyte is converted into the plasma cell, and this plasma cell help to fight against infection to produce antibodies, right? This T lymphoblast is converted into the navy T cell, and navy T cell is converted into the T lymphocyte. This T lymphocyte is now mature, and this will help to fight against different bacterial and viral infections. This T lymphocyte is converted into the helper T cell, cytotoxic T cell, and suppressor T cell. There is a very big concept. Now, this B cell is simply produced from the bone marrow and converted into the plasma cell in the inside the bloodstream. But bloodstream, and sometimes it also converted into the lymph node to convert from IG. Once the IgG come to the cells, and this will activate certain plasma cell, and then they will produce antibodies. Like that, they will fight against infection. But T cell, there is a rules. T lymphocyte is produced from the bone marrow. It will produce from the bone marrow, but for maturation, it will goes to the thymus gland. Now, what is thymus gland? Thymus gland is the gland in where T lymphocyte is maturated, and it will stored there. थाइमस हमारे पास एक ऐसा ग्लैंड है जिसमें हमारे पास टी लिम्फोसाइट की स्टोरेज होगी और इसकी मैचुरेशन होगी. द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम हियर. नाउ वेयर इज अ थाइमस ग्लैंड? थाइमस ग्लैंड इज प्रेजेंट बिहाइंड द स्टर्नम और ब्रेस्ट बोन, राइट? सो थाइमस ग्लैंड हमारे पास कहाँ है? वो हमारे पास बिहाइंड द स्टर्नम है, और वो हमारे पास टी लिम्फोसाइट की मैचुरेशन में हेल्प करता है और स्टोरेज में हेल्प करता है. देयर इज अ सिंड्रोम इज कॉल्ड डिजॉर्जी सिंड्रोम, विच इज कंजेनाइटली द थाइमस ग्लैंड इज एब्सेंट ड्यू टू द डिफेक्ट इन द फेरेंजियल पाउच. सो हमारे पास क्या होते हैं, टी लिम्फोसाइट की मैचुरेशन नहीं होती है, टी लिम्फोसाइट स्टोर नहीं होता है, तो हमारे पास रिकरेंट बैक्टीरियल इन्फेक्शंस, एंड देयर मे बी समथिंग कंजेनाइटल हार्ट इशू और एटसेट्रा. बट दिस इज समथिंग एटसेट्रा, बट नाउ जस्ट यू फोकस ऑन द hematological malignancy point of view, right? So moving forward to the leukemia concept. Before going to the leukemia concept, I just want to put your mind here that suppose if the problem lies in the myeloblast series, or suppose the problem lies in the lymphoblast series. So what happened if suppose the problem is there, myeloblast cells, and this cell is overproliferated or unregulated or over controlled or abnormally grow. So what happened, the cell will be abnormal, and once the cell is abnormal, we are called the cell is cancerous, right? So if the cancer arises from the myeloblast series, right, so we are called acute myeloblastic leukemia, acute myeloblastic leukemia, right? And if the cancer is arises from the lymphoblast series, so we are called acute lymphoblastic leukemia, right? And if the cell is arises from this region, right, this region, we are called chronic myelocytic leukemia. It means that this cancer, the cell is completely mature. And if the cancer arises from the B lymphocyte and T lymphocyte, we are called
क्रोनिक लिम्फोसाइटिक ल्यूकीमिया। सो नाउ द कंसेप्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इस डायग्राम पे आप लोगों ने क्या करना है, बहुत फोकस करना है कि अगर कैंसर यहाँ से आ जाए तो इसको हम अक्यूट माइलोब्लास्टिक ल्यूकीमिया कहेंगे, यहाँ से आ जाए तो इसको हम एल कहेंगे, यहाँ से आ जाए CML, यहाँ से आ जाए CLL। ठीक है, सो ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ मूविंग फॉरवर्ड फॉर द ल्यूकीमिया कंसेप्ट। Leukemia, as I said, that malignancy arises from the bone marrow is called leukemia. जो भी हमारे पास malignancy bone marrow से arises हो जाती है तो उसको हम leukemia कहते हैं. In this condition, the cell proliferations are uncontrolled, unregulated, and overproductions leading to abnormal cells. Of course, whenever the abnormal cell is there, so we are called this is the cancerous cells. And overproliferations mean that there will be uncontrolled division of the cells, which is non-stoppable, right? सो ब्लास्ट सेल्स, अगेन देखो इधर भी हमारे पास ब्लास्ट और साइट्स की वर्डिंग आते हैं, दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्लास्ट सेल से हमारे पास कैंसर आते हैं तो उसको एक्यूट ल्यूकीमिया कहते हैं, साइट से हमारे पास कैंसर आते हैं तो उसको हम क्रोनिक ल्यूकीमिया कहते हैं। सही है। नाउ मेजॉरिटी ऑफ ल्यूकीमिया पेशेंट प्रेजेंटेड विद द कॉन्स्टिट्यूशनल सिम्टम्स। कॉन्स्टिट्यूशनल सिम्टम्स मीन्स कि ये इसका जो ल्यूकीमिया के पेशेंट है वो हमारे पास नॉन स्पेसिफिक सिम्टम्स के साथ आते हैं, सच एज डिजीनेस हो गया, फटीग हो गया, या suppose inability to work, sometimes gum bleeding, pallor. Now the gum bleeding is, this is the sign of इसको हम इग्नोर नहीं करना चाहिए अगर ये स्पॉन्टेनियसली गम ब्लीडिंग होती है। और पेशेंट पहले इसलिए होगा क्योंकि वहाँ पे सेल्स ज़्यादा फोकस कैंसर्स पे करता है, इसके जो हिमेटोपोइटिक्स एक्टिविटीज़ होती है वो ज़्यादा फोकस ओवर प्रोलिफरेशन ज़्यादा वो कैंसर सेल पे फोकस करेगा, तो आरबीसी की जो प्रोडक्शन होगा वो डिक्रीज़ होगा। आरबीसी प्रोडक्शन डिक्रीज तो इधर हमारे पास एबनॉर्मल हेमोग्लोबिन होगी, और जब एबनॉर्मल हेमोग्लोबिन होगी तो हमारे पास पेशेंट एनीमिक होगी। सही है। सो दैट्स वाई पैलर इज डेवलप। सो दिस कंसेप्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट मेजॉरिटी ऑफ द ल्यूकीमिया पेशेंट इज प्रेजेंटेड विद कॉन्स्टिट्यूशनल सिम्टम्स, बट this is also important that it may be not presented with constitutional symptoms, and again it will be something like the patient may present it with weight loss because there is a cancer, you know. So this is also important that you do not ignore the symptoms of the patient, right? Now moving forward for the leukemia types, there is a four types of leukemia. As I said, that first one is acute myeloblastic, acute lymphoblastic, chronic myeloblastic, and chronic lymphocytic. Now leukemias में हमारे पास peak ages बहुत important है for the examination point of view and for the diagnosis purpose as well. But examination point of view से बहुत ज़्यादा है, ठीक है। जो भी हमारे पास पेशेंट होते हैं, बच्चे जो होते हैं स्पेसिफिकली 5 साल से लेकर 20 साल के एज में जो होते हैं, इसमें अगर कोई कैंसर मेलिग्नेंसी अराइज होती है बोन मैरो से, तो उसमें हमारे पास कौन सी मेलिग्नेंसी होगी, वो हमारे पास एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमिया होगी। सही है। तो जो भी हमारे पास अगर एग्जामिनर आपको सिनेरियो देता है कि सपोज 8 year old child presented to your clinic with complaint of this, what is your clinical diagnosis, और उसने हमारे पास ये 4 ऑप्शन दिए होते हैं। सही है। तो आप लोगों ने ऑलवेज पिक करना है किस चीज़ को, एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक को पिक करना है, क्योंकि हमारे पास इसका जो पीक है जैसे वो 5 साल से लेकर 20 साल के दरमियान हमारे पास एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमिया की चांसेस ज़्यादा होती है। सही है। इसी तरह पर हमारे पास एक्यूट माइलोब्लास्टिक ल्यूकीमिया की जो पीक एज है वो 20 साल से लेकर 50 साल तक है। तो अगेन अगर एग्जामिनर आपको हाइट करता है और चेक करते हैं और आपको इसी तरह बोले कि सपोज 32 year old या 35 year old या फॉर एग्जांपल 25 year old, या इसी तरह 50 और 20 के दरमियान कोई MCQs एज उठा दे और आपको दे दे कि पेशेंट आया है इस सिम्टम के साथ, आपकी जो क्लिनिकल डायग्नोसिस होगी वो कौन से होगी। ठीक है। तो आप लोगों ने पिक करना है एक्यूट माइलोब्लास्टिक ल्यूकीमिया को। ठीक है। इसी तरह CML का जो पीक एजेस है वो अबव 50 ईयर से लेकर 60 ईयर तक है, और जो क्रोनिक ब्लास्टिक लिम्फोसाइटिक ल्यूकीमिया का जो पीक एज है वो हमारे पास 60 ईयर, अबव 60 ईयर है। CML का 50 साल से लेकर 60 साल के बीच में जो भी हमारे पास कैंसर होते हैं वो हमारे पास CML है, और CLL अबव 60 ईयर। नाउ मूविंग फॉरवर्ड द हाँ, ल्यूकीमिया के बाद हमारे पास कुछ इम्पोर्टेंट कैंसर्स और भी हैं जिसको हम पॉलीसाइथीमिया वेरा कहते हैं और एसेंशियल थ्रोम्बोसाइटोसिस कहते हैं या मल्टीपल माइलोमा। पॉलीसाइथीमिया वेरा मीन्स दैट दिस द कैंसर ऑफ विच अराइज फ्रॉम द एरिथ्रोसाइट स्पेसिफिकली ओनली आरबीसी से अगर हमारे पास कैंसर अराइज हो जाए तो उसको हम पॉलीसाइथीमिया वेरा कहते हैं। ये भी हम डिस्कस करेंगे, इन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एसेंशियल थ्रोम्बोसाइटोसिस, दिस इज द कैंसर विच इज अराइजेस फ्रॉम द platelets. Thrombo mean this is platelets, so essential thrombocytosis mean that the cancer which is arises from the platelets, and multiple myeloma, this cancer arises from the
प्लाज्मा सेल. व्हाट इज मीन बाय प्लाज्मा सेल? बी लिम्फोसाइट से हमारे पास जो सेल्स कैंसर अराइज होते हैं उसको हम मल्टीपल माइलोमा कहते हैं. ठीक है. नाउ सम टाइम द स्टूडेंट may confuse with these two wording. One is leukemia and another is lymphoma. So I just want to differentiate these two wording with a good concept. Leukemia, as I said, this is the cancer of blood cells that usually start from the bone marrow and often travel throughout the bloodstream. ये हमारे पास एक ऐसा कैंसर है जो कि बोन मैरो से अराइज होता है और पूरी बॉडी में फ्लो करती है, क्योंकि ब्लड है ना, ब्लड तो हर जगह पे फ्लो करती है. इधर मैंने इसका एग्जांपल दिया मिल्क. मिल्क क्या होता है कि मिल्क फ्लो करती है. अगर आप इसको एक चीज़ में डालते हो तो वो हमारे पास फ्लो करेगी. सही है. तो लिम्फोमा हमारे पास क्या है? लिम्फोमा इज अ कैंसर ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम सच एज लिम्फ नोड एंड ओरिजिनेट फ्रॉम द लिम्फ नोड एंड सम टाइम द स्प्लीन एज वेल. लिम्फोमा एक ऐसा कैंसर है जो कि लिम्फ नोड से अराइज होता है. लिम्फ नोड, दिस इज द primary immune organs where B lymphocyte and T lymphocyte is stored and they can fight to different antigen to different pathogens, right? So लिम्फोमा क्या है? ये हमारे पास लिम्फ नोड की कैंसर है. और ल्यूकीमिया हमारे पास स्पेसिफिकली ब्लड कैंसर जो कि बोन मैरो से अराइजेस होती है और थ्रू आउट द ब्लड स्ट्रीम ये फ्लो करती है. नाउ देर इज़ अ वेरी गुड डिफ्रेंशिएशन मिल्क एंड बटर. बटर हमारे पास, अगर हम बटर की एग्जांपल ले लें तो बटर हमारे पास एक जगह पे स्टक होती है. इसी तरह अगर हम लिम्फ नोड की कैंसर होती है ना तो वो हमारे पास एक जगह पर होती है. और जो ल्यूकीमिया है हमारे पास पूरी बॉडी में ट्रैवल करता है. सम टाइम दिस लिम्फ नोड कैंसर इज आल्सो मेटास्टेसाइज बट इज मोर प्रोमिनेंट टू ल्यूकीमिया. ल्यूकीमिया हमारे पास ज़्यादा स्प्रेड होती है, ज़्यादा स्प्रेड करती है एज कम्पेयर टू लिम्फोमा. सो ऑलवेज रिमेंबर दिस कंसेप्ट मिल्क एंड बटर. मिल्क हमारे पास क्या है? ल्यूकीमिया है. और बटर हमारे पास क्या है? लिम्फोमा है. आई होप दिस पॉइंट विल बी क्लियर. नाउ मूविंग फॉरवर्ड. Now this is very important concept is going to start. This is called acute lymphoblastic leukemia. Acute lymphoblastic leukemia, a malignant multiplication of a cell characterized by 20% of blast cell in bone marrow. Now this is the point where you must understand 20% of blast cells. ठीक है. 20% नॉर्मली हमारे पास ब्लास्ट सेल ओनली 2% प्रेजेंट होते हैं. कहाँ पे? बोन मेरो में. तो बोन मेरो में हमारे पास नॉर्मली ओनली 2% blast cells are there. But if suppose we took a biopsy from the bone marrow and doing under uh, microscopic examination and it shows more than 20% of blast cell, it means that this is the case of acute lymphoblastic leukemia. Now acute lymphoblastic leukemia, we are divided into the etiological basis. So this is divided into two types. First of all, this is maybe genetic causes or it may be environmental causes, right? Now we are talking about the etiology of the acute lymphoblastic leukemia. So first of all, we are focusing on genetic mutation. That what is mean by genetic mutation? There will be a Down syndrome. What is mean by Down syndrome? That there is a trisomy 21 chromosome. I just want to mention here. Suppose there is a 23 chromosome, right? Now every chromosome is on pair, right? Suppose this is called 21, this is called 22, and this is called 23. Now what happened in a Down syndrome? There is a extra copy of chromosome lies on 21 chromosome. We are called trisomy. इसको हम क्या कहते हैं? Trisomy कहते हैं. ठीक है. This is called trisomy. Now in this condition, once the extra chromosomes lies on 21 chromosome, 21 pair of chromosomes, so we are called trisomy and this is called Down syndrome, right? Now in Down syndrome, there may be some facial defects and there may be some genital defects, there may be some loss of muscle tones and a lot of abnormalities will be there, such as there may be sometimes presented with microcephaly. All right. So Down syndrome is a case where there is a high chances for acute lymphoblastic leukemia. Now come to the Klinefelter syndrome. इसमें हमारे पास क्या होता है कि क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम में हमारे पास नॉर्मली 46 क्रोमोसोम्स होते हैं. ठीक है. सिंगल. और पेयर की अगर हम बात करें तो 23 क्रोमोसोम्स है. नाउ इन क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम, राइट, क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम, इसमें हमारे पास 47 क्रोमोसोम्स होते हैं. इट मीन्स कि नॉर्मली हमारे पास अगर हम एक्स एक्स की बात करें तो ये हमारे पास फीमेल होगी. सही है. और अगर एक्स वाई की बात करें तो ये हमारे पास मेल होगी. मेल होगा. सही है. नाउ व्हाट हैपन इन 47 क्रोमोसोम? देयर विल बी एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम. देयर विल बी एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम. सो 47 में हमारे पास क्या हो जाता है? इसमें हमारे पास एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम आ जाता है. इट मीन्स कि ये जब पैदा होता है ये बच्चा, इसमें हमारे पास ये होगा मेल. क्या होगा? मेल. लेकिन इसमें हमारे पास इसका जो करेक्टर होगा वो हमारे पास फीमेल की तरह होगा. ठीक है. एंड देयर में बी, नाउ लुक,
this is XXY. Now this is XXY. This patient may be, this patient is will be male, but this child will be but some other feature of female. इसमें हमारे पास क्या होगा, इसके जो फीचर होंगे वो फीमेल की तरह होते हैं, ठीक है. इन सिंपल वर्ड, देयर certain abnormalities like there will be short penis, that may be testicular problem, that may be gynecomastia, which is called enlarged breast, and their height will be more tall, and their voice will be completely changed, which will be light as compared to male voice, right? And there will be a lot of other abnormality as well, in a simple word. So Klinefelter syndrome, this is associated with acute lymphoblastic leukemia case, right? Now coming forward, this is the Turner syndrome, which is also known as 45X chromosome. Now in Turner syndrome, what happened? There will be a missing of X chromosome. Suppose this is 45 chromosome. Normally, suppose if this is the X, this will be female. This is XY. Again, this will be male. Now, in this case, there will be only X chromosome. There is no extra chromosome will be there. So, if there is X chromosome, so it will shows female, but particularly there will be some missing part of there, because it will not be कंप्लीटली फीमेल, बिकॉज इसमें हमारे पास जो एक्स क्रोमोसोम है वो एक है. नॉर्मली हमको कितने एक्स क्रोमोसोम चाहिए, फीमेल को 2 एक्स क्रोमोसोम चाहिए. तो इसमें हमारे पास अब एक्स क्रोमोसोम क्या है, वो एक है. नाउ इस फीमेल में हमारे पास क्या होगी, देयर इज़ नो ओवरीज. अगर सपोज ओवरीज नहीं होगी तो देयर विल बी नो मेंस्ट्रुएशन, no menstrual period, we are called amenorrhea, and there will be congenital heart disease as well. So this is very important, that the Turner syndrome female, what happened in a Turner syndrome, there will be 4 5 45 only X chromosome, which will lead to the female, but there is no ovaries. There will be amenorrhea, which is absence of menstrual cycle, and there will be congenital heart disease and other abnormalities also. Now the Turner syndrome patient के जो chances है, इसमें हमारे पास acute lymphoblastic leukemia के chances बहुत ज़्यादा है, सही है. Now the Bloom syndrome, this is the a skin pigmentation problem. इसमें जो बच्चे होते हैं उसमें हमारे पास स्किन पिगमेंटेशन प्रॉब्लम होती है, स्किन का प्रॉब्लम होता है. दिस इज ड्यू टू क्रोमोसोमल इंस्टेबिलिटी, राइट. नाउ फेनकोन एनीमिया, दिस इज कॉल्ड congenital aplastic anemia, in which there is a decreased RBC productions, decreased platelets, decreased neutrophil. This is called, whenever these three is combinedly decreased, RBC, platelets, neutrophil, we are called pancytopenia. इसको हम क्या कहेंगे, pancytopenia कहेंगे, ठीक है. Now moving forward, I hope you will understand better. So mutation in tumor suppressor gene, what does it mean? Mutation mean whenever the problem lies in the gene, we are called mutation or something defect. P53 gene is, remember, P53 gene is 80% prevent cancer cells. Now अल्लाह पाक ने क्या किया है, हमारे बॉडी में कुछ सेल्स, खास सेल्स पैदा किए जो क्या करे, वो कैंसर सेल को ख़त्म कर दे. अगर सपोज उस कैंसर सेल में कोई प्रॉब्लम आ जाए, म्यूटेशन आ जाए, डिफेक्ट आ जाए, तो हमारे पास क्या हो जाता है, कैंसर काज होता है, ठीक है. नॉर्मली अल्लाह पाक ने क्या किया है, अगर सपोज एक साइड पे कैंसर बढ़ता है तो दूसरी टाइप से हमारे पास वो जो कैंसर सेल्स है उसको क्या करते हैं, उसको डिक्रीज करते हैं, उसको प्रिवेंट करते हैं. उस जीन को हम क्या कहते हैं, P53 जीन कहते हैं. ऑन द अदर हैंड, देयर इज सम जीन विच कैन काज कैंसर, दिस इज कॉल्ड ट्यूमर ऑन्कोजेनिक जीन, राइट. बट P53 आप लोगों ने क्या करना, याद रखना है कि अगर हमारे पास P53 जीन में म्यूटेशन आ जाए तो उधर हमारे पास जो ल्यूकीमिया के जो चांसेस है वो हमारे पास बढ़ जाती है. नाउ इफ़ यू लुक ऑन टू एनवायरमेंटल काजेस, दिस इज़ वेरी इजी. एक्सपोजर टू रेडिएशन, अगर जो वो बच्चा जो कि ज़्यादातर रेडिएशन को एक्सपोजर है, ठीक है, और मे बी सम सर्टन ड्रग एज वेल, कोई बच्चा कोई ख़ास किस्म की दवाई लेती है तो उसमें हमारे पास acute lymphoblastic leukemia की चांसेस ज़्यादा होते हैं. नाउ देयर इज़, आई जस्ट वांट टू मेंशन वन पॉइंट फार्माकोलॉजिकली. इस तरह नहीं है कि हर ड्रग्स वो कैंसर काज कर सकते हैं. वो ड्रग्स जो कि इसके जो फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम एक बच्चा ले दे और जिसकी साइड इफ़ेक्ट ज़्यादा है, उसका उसका इसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है. बट सिंपली यू आर मच बी फेमिलियर अबाउट द एक्सपोजर टू रेडिएशन इन्वायरमेंटल काजेस. नाउ अगर हम काजेस पे बात करें acute lymphoblastic की, तो जेनेटिकली ये तो बहुत कम है, ख़त्म नहीं होते, लेकिन सिंपली आप लोगों ने क्या करने, नॉट मल्टीफैक्टोरियल काज आप लोगों ने याद रखने, ठीक है. पीकेज अगेन दिस इज 5 to 20 years, or sometime this is 2 to 8 years, 2 to 6. What does it mean by, I'm just mixing this point, I just read from some book that it will write 5 to 20 years, 2 to 8 years, and 2 to 6 years. Different books में मैंने स्टडी किया है, तो उसमें कुछ बुक्स में 2 साल से लेकर 8 साल तक लिखा है, कुछ में 2 साल से लेकर 6 साल तक लिखा है, ठीक है. सो सिंपली आप लोगों ने क्या करना है, 5 साल से लेकर, या फॉर एग्जांपल 1 साल से लेकर 20 साल तक में जो भी कैंसर है वो आप लोगों ने याद रखने कि वो एल होगा, ठीक है.
इसमें हमारे पास एक और टॉपिक मैं इसके साथ कोरिलेट करता हूँ, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड दिस इज़ कॉल्ड कॉमन चाइल्डहुड मैलिग्नेंसी, राइट। जो भी वो मैलिग्नेंसी, वो कैंसर्स जो बच्चों में बहुत कॉमन होते हैं, ठीक है। उसमें फर्स्ट हमने डिस्कस कर लिया जिसको हम ल्यूकीमिया कहते हैं। नंबर सेकंड, सेकंड पे हमारे पास क्या है, ब्रेन की ट्यूमर है। ब्रेन की ट्यूमर हमारे पास थ्री टाइप्स है, मतलब थ्री डिफरेंट ट्यूमर है। एक को हम ग्लायोमास कहते हैं जो कि ग्लायल सेल से राइज होते हैं, इसको एक को हम एस्ट्रोसाइटोमा कहते हैं जो कि एस्ट्रोसाइट से राइज होते हैं। एंड नंबर थर्ड वन विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन द चाइल्डहुड मैलिग्नेंसी in case of a brain tumor, this is called medulloblastoma, ठीक है। what does it mean by medulloblastoma? This is the tumor which is arises from the back of the skull which is called cerebellum। उससे हमारे पास जब ट्यूमर अराइज हो जाते हैं तो उसको हम मेडोलोब्लास्टोमा कहते हैं, सही है। एंड इट विल affect coordinal movement and some etc as well, and some etc point of view in that condition, in neurosurgical point of view, right. Now lymphoma, and this is called as I said that this is the cancer of which is malignancy which is arise from the lymph node, and the common is called Hodgkin lymphoma and non-Hodgkin lymphoma. Lymphoma, I will discuss in a separate lecture. What is mean by neuroblastoma? The word neuroblastoma means that arise from adrenal gland. इसमें आप लोगों ने क्या करना है, कंफ्यूज नहीं होने, ठीक है। नैरो आप लोगों ने पिक करना है कि यार इसका जो कैंसर है वो हमारे पास ब्रेन के कोई पार्ट से आ रही है, लेकिन ये हमारे पास अराइज होते हैं एड्रिनल ग्लैंड के, स्पेसिफिकली सिंपैथेटिक चेन की मेलिग्नेंसीज होती है, ठीक है। सिंपैथेटिक एक हमारे पास होता है सिंपैथेटिक चेन, एक हमारे पास होते हैं पैरासिम्पैथेटिक चेन। सिंपैथेटिक चेन में हमारे पास एड्रिनल ग्लैंड से, एड्रिनल मेडोला से स्पेसिफिकली एपिनेफ्रिन और एपिनेफ्रिन ये क्या होते हैं, वो रिलीज होते हैं। सो एंटीरोक्रोमेफिन सेल का जो कैंसर होता है जिसको हम फ्यूक्रोमोसाइटोमा भी कहते हैं, उसको हम स्पेसिफिकली कोरिलेट करते हैं न्यूरोब्लास्टोमा के साथ। नाउ द फिफ्थ वन इज कॉल्ड विलियम्स ट्यूमर विच इज आल्सो नोन एज नेफ्रोब्लास्टोमा। अगेन दिस इज वेरी कॉमन इन चाइल्डहुड मैलिग्नेंसी। ये एक ऐसा ट्यूमर है जो कि किडनी से अराइज होते हैं जिसको हम विलियम्स ट्यूमर कहते हैं, ठीक है। एंड इट इज आल्सो समटाइम एसोसिएटेड विद द अक्यूट पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज, right. So this is the common childhood malignancy. Now moving forward, types of acute lymphoblastic leukemia. One is called B type of LL and another is called T type of LL. So B type LL is most common because it's 80% and T type of LL is 20%. Now this is very high yield, the T type of LL. How we can differentiate that this acute lymphoblastic leukemia is B type or this is T type? Whenever the T type of LL patient presented with your clinic, so this there will be associated with mediastinal mass। जो भी हमारे पास mediastinal mass होते हैं ना चेस्ट में, वो हमारे पास एक ट्यूमर ट्यूमर तो खैर नहीं होगा लेकिन मास शक्ल के एक यू नो ट्यूमर्स टाइप एक जगह से सपोज एक ग्रो होती है, एक्सटर्नल ग्रो होती है, वो हमारे पास किस चीज़ के साथ रिलेटेड है, टी टाइप ऑफ एल के साथ रिलेटेड है, ठीक है। इट इज़ आल्सो नोन एज सुपीरियर वेना केवा सिंड्रोम इफ इट इज़ आई एम रॉन्ग नॉट रॉन्ग। सुपीरियर वेना केवा सिंड्रोम में क्या होता है कि इसमें malignancy arise होता है, bronchogenic carcinoma, small cell lung carcinoma, or it may be chronic lung carcinoma as well, which is associated with pathology lies on the superior vena cava, and blood do not go to the heart, and there may be a facial plethora, or there may be something like jugular venous pressure will be increased because blood does not go to the liver, but doesn't go to the heart, sorry for that. Now moving forward, clinical feature is very important. For the leukemic patient, the patient will present pallor, very ill, dizziness, spontaneous bleeding. Now the spontaneous bleeding is very important. What happened? Spontaneous bleeding, if it is bleeding come from the nose, we are called epistaxis. If it is bleeding come from the tooth, we are called gum bleeding. And if it is bleeding come from the GI, like gastrointestinal, we are called hematemesis, melena, and hematochezia. Hematemesis mean whenever the fresh blood is coming out in your vomiting, this is called hematemesis. Melena mean that there is a kale, black color stool, uh, black color stool, which is highly associated with upper GI pathology, and hematochezia mean that there is a fresh blood in the stool, right? And this is associated with the rectum, colon pathology, right? Lower GI pathology. Now, easy fatigability, as I said, because if the patient is pallor, there will be hemoglobin problems. So of course, it will be easy fatigue and significant weight loss. Now, this point is very, very important, right? The significant weight loss.
Significant weight loss. Every cancer patient will be presented to significant weight loss because the cancer cells to destroy the muscle mass and their fats and all those stuff. Hepatosplenomegaly, because of course if there is a problem lies in the bone marrows and the spleen and the liver want to produce more erythromedullary poiesis activities, and there will be hematuria as well. There will be skin rashes like petaki, purpura, and ecchymosis. And if the cancer is metastasized from one part to the another part of the body, so now what happened if the cancer, this malignancy or this leukemia goes to the testes, we are called a testicular swelling. And if it is goes to the in male, where there will be testicular swelling, and if it is goes to the central nervous system, so particularly it will affect headache and vomiting, seizure, or loss of conscious, right? Now this 2 point, in this situation, if the cancer is metastasized from your male in male testes or in central nervous system, so that's why the patient may be presenting with testicular swelling or headache or vomiting or seizure, loss of conscience, right? Now come to the lab investigation. This is just very important. Always we start from the basic investigation. We do not go directly to the bone marrow biopsy, right? So as a doctor, we always must start from the basic investigation such as CBC. CBC, there will be HB decrease, of course, if the patient present with the pale color. So as we suspected that there will be decreased RBC, hemoglobin, there will be decreased platelets. That's why the patient presenting with the spontaneous bleeding, there will be neutrophil decreased. So if neutrophil is decreased, the patient will be recurrent infection. The patient will be very ill. Now ये देखो clinical feature आप लोगों ने पढ़ लिया ना, तो lab investigation is very easy. Now total leukocyte count will be less. Normal total leukocyte will be from 4,000 to 11,000, right? So suppose if there is the excessively decreased total leukocyte counts like 20,000, suppose 20,000, not a 20,000, just 200 or 50, 500. इसमें हमारे पास क्या होता है, अगर 4,000 से हमारे पास कोई 2,000 तक आ जाए या 1,000 तक आ जाए या कोई फॉर एग्जांपल 500 तक आ जाए, ठीक है। सो इसमें हमारे पास टोटल लिकोसाइट काउंट्स क्या होंगे, वो डिक्रीज होंगे। Okay, now suppose this is basic lab investigation, and if we took a bone marrow biopsy from the patient, of course this is a gold standard investigation, but we do not straightforward to this investigation if it doesn't do this CBC, right? Always do basics. Now if a bone marrow biopsy advised to the patient, we took a bone marrow biopsy. Now from where we took bone marrow biopsy, so the site from a bone marrow biopsy is a iliac crest, right? Which is hip bone iliac crest area. Now, the bone marrow biopsy, as I said in the acute lymphoblastic definition, that there will be more than 20% of blast cells in the bone marrow biopsy, and this is the gold standard investigation. Once we confirm from the bone marrow biopsy, now we took a decision that how we can start a chemotherapy to this patient. Now, if suppose if there is a blasts more than 20% of blast cells, now there is one enzyme which will differentiate the leukemic acute myeloblastic and acute lymphoblastic. If suppose there one enzyme which is called myeloperoxidase enzyme, if it is positive, so we are suspected that this will be the case of myeloblast, acute myeloblastic leukemia. And if it is negative, so it will be leukoblastic leukemia. Okay? So always remember the myeloperoxidase enzyme, that this is very important for the MCQ point of view. If suppose the examiner give you scenario, if the patient present with this complaint and myeloperoxidase enzyme will positive, what is your clinical diagnosis? Acute myeloblastic leukemia or acute lymphoblastic leukemia? So always put acute myeloblastic leukemia. Okay, now this is very important. uh, the MPO, as I said, the myeloperoxidase enzyme will be negative in case of lymphoblastic leukemia, and it will be positive in case of myeloblastic leukemia. But what does it mean by TDT? The TDT will be positive in case of lymphoblast, and it will be negative in case of myeloblast. Okay, I hope you will clear this point. Now moving forward, which trisomy is associated with LL? Okay, now as I said, trisomy, डाउन सिंड्रोम में हमारे पास क्या होता है, ट्राइसोमी होती है ना. सो दैट्स वाई वी आर कॉल्ड 21 क्राइसोमी क्रोमोसोम डिफेक्ट इज कॉल्ड डाउन सिंड्रोम. सो ऑलवेज रिमेंबर दैट डाउन सिंड्रोम ट्राइसोमी इज एसोसिएटेड विद ALL. ठीक है, दिस इज द MCQs questions. Now further investigation, if it is cancer involved in testes, so we do testicular ultrasound, USG, and abdomen as well. And if there is involvement of the central nervous system, if this patient presented